Good morning, students. I hope you all are fit and healthy. Now, today we'll be discussing the next grammar topic, that is the pronoun. We'll be starting it, and today we'll discuss its first part. Now, what is a pronoun? From class 1, you have been studying that a pronoun is a word that is used in place of a noun. प्रोनाउन वो शब्द है जिसे हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं. राम इज अ बॉय, राम इज अ स्टूडेंट. राम बॉय है, एक लड़का है, और राम स्टूडेंट भी है. अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हम लोगों ने राम को दो जगह इस्तेमाल किया, बट वी कैन राइट इट एज राम इज अ बॉय, ही इज अ स्टूडेंट. तो सेकेंड सेंटेंस में हमने क्या किया, राम को रिप्लेस कर दिया ही से. तो यहाँ ही हो गया हमारा प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या है, व्हाट आर इट्स कैटेगरीज, विल डिस्कस इट इन डिटेल. Now what is a pronoun? Definition हम एक बार वापस देखेंगे. A pronoun is a word used in place of one noun or more than one noun. Pronoun वो शब्द है जो कि नाउन या एक या ज़्यादा नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. For example, when Mohan saw the signal, Mohan pointed the signal out to Ravi. आपके सामने दो सेंटेंस हैं, और सेकेंड सेंटेंस में यदि आप देख रहे हो तो मोहन और सिग्नल अलग आपको दिखाई दे रहे हैं. सेम सेंटेंस मतलब ये रिपीट हो रहे हैं. सेम टू सेंटेंसेस कैन बी रिटन एज व्हेन मोहन सॉ द सिग्नल ही पॉइंटेड इट आउट टू रवि. व्हाट वी डिड, सेकेंड टाइम जो मोहन आया था उसे हमने ही कर दिया, एंड सेकेंड टाइम सिग्नल आया वी रिप्लेस्ड इट विद टू. तो ही एंड सॉरी वी रिप्लेस्ड इट विद इट. ही एंड इट दोनों ही प्रोनाउंस. Now, what are the different categories of pronouns? Pronoun अलग अलग तरह के होते हैं. In your textbook, you'll find the 9 categories. Same here are, but here two, you'll see that fourth one, there are two pronouns given together. The first is personal pronoun, second possessive pronoun, third demonstrative pronoun, fourth reflexive pronoun and emphatic pronouns, 5 interrogative pronoun, 6 relative pronoun, 7 reciprocal pronoun, and 8 indefinite pronoun. Now what are these different types of pronoun? We'll discuss one by one in a further slides. Now the first one, what is a personal pronoun? जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी है पर्सनल प्रोनाउन, वो क्या है, विल डिस्कस हियर. पर्सनल प्रोनाउंस रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स. पर्सनल प्रोनाउन स्पेसिफिक पीपल और थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं या उनको दर्शाते हैं. वी यूज देम डिपेंडिंग ऑन, हम इन्हें अलग अलग जगह अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. जब हम सिंगुलर और प्लूरल नंबर की बात करते हैं तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर वी यूज आई, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल वी यूज वी. नाउ पर्सन्स, when we are talking for first person we use I, second person we use you, and for the third person we use he. Now in genders, when we are talking about a male we use he, talking about female we use she, and when we are talking about neuter gender we use it. And lastly, when we are discussing about the cases, when we are talking about subject, we is used, and when we are talking about object, us is used. We use personal pronoun in place of person or people that we are talking about. जब हम हमारे
पास के पर्सन या पीपल के बारे में बात करते हैं तो उस समय हम पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं. Now here you can see that when we are talking about different persons, how personal pronouns are used in singular and plural form. For the first person, in singular case, we use I, me, my and mine. And for the plural, we use we, us, our and ours. Second person, when we are talking, we use in singular you, your and yours. And in plural case, we use you, your and yours. For second person, singular and plural, both are same. When we are discussing about the third person, we use he, him, his, she, her, hers, it and its. And third person, when we are talking about plurals, we use they, them, their and theirs. Now the next pronoun is possessive pronoun. यदि हम word possessive को ही देखें तो ये बताता है कि किसकी चीज है. We use possessive pronouns to refer to a specific person, people or things, the antecedent belonging to a person, people and sometimes belonging to an animal, animals or thing and things. जब हम possessive pronoun का इस्तेमाल करते हैं तो वो रेफर करता है कि चीज किसकी है, किसको बिलोंग करती है. You will never find a possessive pronoun near a noun despite the fact it is genitive of personal pronouns. आप possessive pronoun को कभी भी noun के पास नहीं देखते हैं. We use possessive pronouns depending on number, singular, mine and plural, ours. Person, first person we use mine, second person yours and third person his. And when we are talking for the genders, male we use his and for female we use hers. Now how are possessive pronouns used? Possessive pronouns are used before nouns. For singular we use my, your, his, her and his. And when we are using in plural case we use our, your and their. Now when we are using when we are using any possessive pronoun alone, in singular case we use mine, your, his, her and its. And when we are using the possessive pronoun in plural case, we are using our, yours and theirs. तो इस तरह से हम देखते हैं कि possessive pronoun को noun के साथ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह से वो लगते हैं, और जब हम उन्हें noun के बिना ही अकेले इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें कैसे दिखते हैं. Now in your textbook some examples for possessive pronoun are given. This book is mine. ये किताब मेरी है. This house is ours. ये घर हमारा है. This pen is his or hers. ये पेन उसका है. This box is yours. ये बॉक्स तुम्हारा है. And this car is theirs. ये कार उनकी है. तो different ways for different people we are using different types of possessive pronouns. Now when you read this chapter from your textbook, you might find some differences. No need to worry. Just read them one by one so that you can understand the slides as well as your book text easily. Now today we have discussed two pronouns, that is personal pronoun and possessive pronoun. We'll revise it once again. Personal pronoun, a pronoun that stands for a person or a thing is called a personal pronoun. जब pronoun किसी व्यक्ति या चीज के बारे में खड़ा हो या उसको दर्शा रहा है तो वो personal pronoun हो जाती है. Then we discussed that personal pronoun has three person, first person, second person, third person.
For subjective cases, we also have discussed. Now, when we are using the personal pronoun it, तो उस it को हम animals, child, non-living things या expressions के साथ में हम इस्तेमाल करते हैं. The next pronoun that we discussed was possessive pronoun. Possessive pronoun that shows possession, ownership and a sense of belonging are called possessive pronoun. Pronoun जो बताए कि possession किसकी चीज है, ownership कौन उसको ओन करता है या वो किस व्यक्ति से रिलेटेड है या किस पर्सन थिंग से रिलेटेड है, वो possessive pronoun होता है. I hope you have understood it very well. Thank you. Stay fit and healthy.